Hello students, welcome back to Arman Educational Tutorials. How are you all? I hope you're all fine and doing well by the God grace. First of all, I would like to congratulate to all my viewers for getting outstanding points and scoring 9 and 10 points in English and for clearing semester 1 successfully. And you know what? I have received many compliments like appreciating, blessings, motivating, encouraging, and all the viewers are very much thankful to my channel for explaining in both the languages, English and Hindi, and still keep on suggesting me to continue in both the languages. So in this video also I'm going to teach you in both the languages. So without delaying, let's get into the topic. Pick up your pen and paper and note down the important points. Students, in this video I'm going to teach you from semester 3 unit 1 prose. Under prose, a very interesting story written by Rabindranath Tagore, A Wrong Man in Workers' Paradise. Students, before starting the lesson, I would like to give a brief explanation about the Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore, born in 1861 and died in 1941, was a versatile artistic genius, a poet, novelist, playwright, painter, music composer, philosopher, and visionary educationist. He won the Nobel Prize for Literature in 1913 for his seminal work Gitanjali. He was the first Asian to receive the Nobel Prize. He composed the national anthem of both India and Bangladesh. As a visionary educationist, he founded the experimental school Shantiniketan. Tagore was given the honorific Gurudev by Mahatma Gandhi. Tagore was not only a great living institution but also the voice of India's spiritual heritage in the Western world. Here I would like to explain the title of the prose written by Rabindranath Tagore. In this story, Tagore presents the man as an idler and calls the other place paradise. Since Tagore employs irony as the literary device to convey his message, we are not supposed to take his words literally. Irony is a way of using words and tone to mean something quite opposite to what is actually being said. Hence, Tagore does not mean something different from what he says in this story. Rabindranath Tagore's short fictional story, A Wrong Man in Workers' Paradise, begins with the introduction of the protagonist, an artist. He was a painter and sculptor. The man never believed in utility or doing any useful works, and so he indulged in bad whims and wishes. He would spend his time in making small pieces of sculpture such as men, women, and castles, and quaint Athenian things dotted over the seashells. Since he would waste his time on the useless and unnecessary things, people laughed at him. He spent his life on earth in doing such useless work. Tagore's genius as a writer has come to the fore when he writes, "Some boys never ply their books and yet pass their examinations." A similar thing happened to this man. He spent all his life in unnecessary work on the planet Earth, yet after his death, the gates of the heavens flung open for him. Though he had not done any useful and productive work on the planet Earth, the aerial messenger who took charge of the man mistakenly sent him to the workers' paradise. स्वागत है आप सबका अरमान एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आज हम ए रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर एक आदमी का है। वो आदमी जो है हमेशा अपने मन के तरंगों में रहता है। टैगोर ने उसे सुस्त बताया है, यानी आइडलर बताया। आइडलर मीन्स लेजी, सुस्त, जो कोई यूजफुल काम नहीं करता, बेकार में टाइम बर्बाद करता है, यानी कि बहुत ही आलसी आदमी था, लेकिन बहुत ही अच्छा कलाकार था। उसे आर्ट बहुत पसंद था। आर्ट माने स्कल्पटिंग, पेंटिंग, यानी कि समंदर के किनारे जो शिपियाँ होते हैं उससे, और जो स्मूथ पत्थर होते हैं उस पर, और मिट्टी के छोटे छोटे औरत, आदमी और महल बनाकर उस पर रंग भरा करता था। ज़्यादातर टाइम नीटलेस चीज़ों में गुजार देता था और लोग बहुत ही हंसते थे उस पर, और वो अपना बहुत सा समय व्यर्थ चीज़ों में गुजार देता था। और जब उसकी डेथ हुई तो मिस्टेकनली, भूल से, एरियल मैसेंजर उसे स्वर्ग भेज देती है। यहाँ पे टैगोर जी ने एग्जाम्पल के तौर पर एक मुहावरा बताते हुए कहा है कि
Some boys never ply their books and yet pass their examinations. इसका मतलब होता है वर्क बिजली। ज़्यादातर वक्त किताबों में नहीं बिताते, फिर भी वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से मेरिट में पास हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये आइडलर आदमी स्वर्ग पहुंच जाता है, और वह स्वर्ग पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पे अवकाश के बदले, अवकाश माने लीजर के बदले सब कुछ है, और स्वर्ग के लोग अपना हर वक्त का सदुपयोग करते हैं। लेट्स कंटिन्यू द समरी इन इंग्लिश। The people in workers' paradise were busy in their work. For them, time was precious. They exclaimed that they hardly had time to spare. The women in the workers' paradise would complain that they always had handful work and were making use of every single minute. They would feel happy and exulted in doing work. However, the newcomer, the man artist, did not fit in well with the scheme of things in workers' paradise. He launched in the streets absent-mindedly and was jostled by the hurrying men. He lay down in the green meadows, spent near a torrent running stream, and still he was always in the way of the busy farmers. Once an active and hustling-bustling girl went every day to a silent torrent to fill her pitchers with water. She seems to be wasting no time at all, and so her hair was carelessly done. The girl's movements were compared with the rapid movements of a skilled hand on the strings of a guitar. The busy girl inquired him if he would draw water from the torrent, but reply surprised her. When he said that he would like to draw pictures on her pitcher, annoyed, the girl left the place, saying that she had no time to waste on such people. After his repeated persuasions, the girl sprayed a picture for this man. The man drew line after line, put the color after color he painted on the picture. When the girl stared at the art, and her eyes were filled with wonder and amazement, with surprise, she asked him about the purpose of the lines and colors. The man laughed and said that a picture never had any meaning and it never served any purpose. The man's painting had a profound effect on her behavior and attitude towards life and work. The hurrying feet of the girl were slowing down. Now she was attracted to the art. Next time, the wrong man offered to make ribbons for her hair. After receiving the colored ribbons, she started spending a lot of time daily in tying the colored ribbons round her hair. As her time slipped by, much of her work left unfinished. Because of the influence of the art and the artist, work in the workers' paradise began to suffer. Many people who had been active before were now idle. They were now spending their precious time on unnecessary things such as painting and sculpture. The anxious elders called for a meeting and ordered the man to leave the place. The girl of the silent torrent, came forward to accompany him, leaving the elders in shock and surprise. However, art is valuable as art. The only purpose of art is the pursuit of pure beauty and pleasure. An artistic creation such as sculpture, literary work, song, etc. can arouse a variety of emotions in human heart. The aesthetic value of art cannot be measured on utilitarian scale. The central idea of Tagore's story is art for art's sake. It means that art need not have to teach values, gives instruction, or take sides. Still, it can be enjoyed and appreciated even in the absence of its purpose. Hence, Rabindranath Tagore conveys the complex concept in a simple and humorous narrative. The story also reminds us of a popular proverb: all work and no play makes a jack a dull boy. The artist represents life of leisure and recreation to human heart. Thus, the author takes the side of the man, that is the artist. वह स्वर्ग पहुंचकर क्या देखता है कि यहाँ पे लोग अपने टाइम का सदुपयोग करते हैं और लोग अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। और जब वो देखता है कि लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं तो वो उनका मजाक उड़ाता था वहाँ पर, और वो इधर उधर घूमता रहता था। कभी कभी जो बिज़ी होते थे उनसे टकरा भी जाता था। और हरे भरे जो चारागाह थे वहाँ पे वो हमेशा लेटा रहता था। नदियों के पास जाके किनारे से लेटा रहता था। वहाँ पे जो किसान थे वो सब देख के उसकी खिंचाई करते थे। और यहाँ पे जो है एक लड़की होती है जो एक साइलेंट टोरेंट, जो साइलेंट झरना होता है
वहाँ से पानी ले लेकर भर भर कर पिक्चर माने ये केटली होती है पानी जिससे हम लोग पेड़ पौधों को डालते हैं, उसमें पानी भर भर के बड़ी तेज़ी से वो पौधों और पेड़ पौधों को पानी डालती थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो लड़की उस आदमी से पूछती है कि आप कुछ काम करना चाहोगे, अगर करना चाहोगे तो किस तरह का काम करना चाहोगे। तभी वो आदमी उस लड़की से पौधों को पानी डालने वाला पिक्चर मांगता है। आर्टिस्ट तो होता ही है, उस पिक्चर पे बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स यानी कि कलाकृति करता है और उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भरता है, यानी कि चित्र उतारता है और सुंदर सुंदर रंग भरता है। लड़की जब देखते हैं चित्र बनाया गया है और लाइन खींची गई है तो वो उस आदमी से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। जो आदमी है वो कहता है कि इसका कोई उद्देश्य और कोई मतलब नहीं हो सकता। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती और वो पिक्चर लेके वहाँ से चली जाती हैं। घर जाकर उसे बार बार घूरती रहती हैं, उलट पलट कर डिफरेंट एंगल से बहुत गौर से देखती रहती हैं, फिर भी उसका क्या पर्पस हो सकता है समझ नहीं पाती। जब वो दूसरे दिन पानी भरने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो स्पीड होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, धीरे हो जाती है। एक नई अनुभूति महसूस करती हैं। जब वो अगले दिन पानी भरने जाती हैं तो वो आदमी उस लड़की से उसके रिबन मांगता है और उस रिबन पे सुंदर सुंदर और कलरफुल यानी कि रंगीन चित्र बना देता है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। तो लड़की उस रिबन से अपने बाल बांधने में बहुत ही समय बर्बाद करने लगती है, जिससे क्या होता है कि उसका बाकी सारा काम अधूरा रहने लगता है। वजह से पैराडाइज स्वर्ग के लोग भी बहुत ही आलसी होने लगते हैं। वो लड़की नहीं बल्कि सारे स्वर्गवासी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय चित्रकला बनाने में और उसे एंजॉय करने में समय वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से सभी स्वर्गवासी का काम पेंडिंग में रहने लगता है। इस वजह से पैराडाइज के जो एल्डर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बहुत ही चिंता में आ जाते हैं और एक मीटिंग बिठाते हैं। उस मीटिंग में ये बात की जाती है कि स्वर्ग का इतिहास है, अभी तक इस तरह की हालत कभी भी स्वर्ग की नहीं हुई है। इस तरह से फिर जो दूत होता है, जो एरियल मैसेंजर होता है, वो भी अपनी गलती स्वीकारता है कि उसकी गलती से एक रॉन्ग मैन पैराडाइज में आ जाता है। उस रॉन्ग मैन को वहाँ पे बुलाया जाता है और वहाँ के अध्यक्ष उससे स्वर्ग को छोड़ने के लिए कहते हैं, पैराडाइज को छोड़ने के लिए कहते हैं। जब वो जाने लगता है तो लड़की भी आ जाती है कि और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। ये सुनने के बाद सभी स्वर्ग के लोग थे वो बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि आज तक कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है और जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए इसका टाइटल जो है ए रॉन्ग मैन इन द वर्कर्स पैराडाइज रखा गया है। सो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही मदद मिली होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ न्यू टॉपिक, punishment in kindergarten, synonyms and antonyms and prepositions. Until then, keep learning. God bless you.